गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपके एक बार फिर से इस लाइव स्ट्रीम पर। वंस अगेन एज ऑलवेज आई एम जीमी ऑल्टर हियर टॉकिंग टू यू अबाउट क्रिकेट वंस अगेन। आप सबसे पहले आप लोग जो यहाँ जुड़े हैं, हेलो, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जहां से भी आप जुड़े हो, प्लीज लाइक बटन दबाइए, स्प्रेड द वर्ड, हिट दैट लाइक बटन। जितना भी आप लोग लाइक बटन दबाएंगे उतना ही इस वीडियो के रीच बढ़ेगा। स्ट्रीम का नाम है, आप सब जानते हैं, कॉफी एंड क्रिकेट विद जेमी। सो हियर आई एम विद माय कप ऑफ कॉफी टॉकिंग क्रिकेट। दोस्तों, आज है डे 3 ऑफ द वर्ल्ड कप। डे 1 ऑफ कोर्स वी सॉ न्यूजीलैंड बीट इंग्लैंड। कल नेदरलैंड्स ने काफी काफी परेशानी दी पाकिस्तान टीम को, लेकिन पाकिस्तान टीम एंड में जीत गई, वो भी बड़े बड़े मार्जिन से। लगा था शायद यू नो नेदरलैंड्स माइट पुश द मामला टू 40-50 रन अवे, बट नहीं, काफी बड़े मार्जिन से कल जीत दर्ज किया पाकिस्तान टीम ने। एंड टुडे इट्स द फर्स्ट डबल हेडर डे। डबल हेडर्स कल हमने बात किया था, किसी व्यूअर ने मुझसे पूछा भी था कि भाई इतने लंबा टूर्नामेंट में ये ज्यादा डबल हेडर डेज क्यों नहीं होते हैं? इट जस्ट कम्स डाउन टू टीवी प्रायोरिटी, होस्ट ब्रॉडकास्टर प्रायोरिटी, बट जो भी है, कम है डबल हेडर डेज। But today is the first day. We have a match going on right now in Dharamsala between Afghanistan and Bangladesh. उस पे मैं already एक preview show कर चुका हूँ Raposo ऐप पर। I thought I would talk about the second match of the day, यानी कि दोपहर के 2 बजे जो अरुण जेटली स्टेडियम यहीं दिल्ली में अब श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाला है। अफसोस की बात है दोस्तों कि आई बीन टेलिंग यू ऑन द लाइव स्ट्रीम कि मुझे जाना था। एज यू कैन सी हियर, आई गॉट दिस 4 days ago, मंडे एक्चुअली, 5 days ago आई गॉट माय मीडिया अक्रेडिटेशन। ये आप देख सकते हैं, जेम्स ऑल्टर, रिपोर्टर, टीवी 9 न्यूज नेटवर्क। आई डू शोज फॉर टीवी 9। आई गॉट दिस। इससे क्या होता है, दिस इज योर मीडिया अक्रेडिटेशन। ये सारे वर्ल्ड कप वेन्यूज में दिस इज एक्सेप्टेबल। लेकिन उसके ऊपर यू नीड टू वेट फॉर अ मैच डे अप्रूवल। मैच अप्रूवल मीन्स इस कार्ड से आप कहीं जा सकते हो, लेकिन उसके ऊपर से आईसीसी ने कुछ ऐसा रखा है, यू नीड टू गेट अ मैच डे अप्रूवल ऑन द डे और यू अलाउड इन टू द ग्राउंड और नॉट। और कल रात को तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे, बहुत लेट है वैसे, ये मेरे इनबॉक्स पे एक मेल आया था कि यू हैव बिन रिजेक्टेड फॉर दिस मैच। रिजेक्टेड? मैं तो ऑलरेडी 3 वर्ल्ड कप्स कवर कर चुका हूँ, दिस इज माई फोर्थ वर्ल्ड कप। आई गॉट, एज यू कैन सी, आई गॉट दिस वर्ल्ड कप मीडिया अक्रेडिटेशन टैग। तो रिजेक्टेड क्यों? तो लगाया मैंने कॉल आईसीसी वालों को, वहां से कुछ नहीं हुआ। मैंने मैसेज डाले, फिर जब जब तक मैं इस पे लग गया तो रात को कुछ 11 बजे बज चुके थे। मैंने कहा मैं डीडीसीए वाले को तो परेशान नहीं करूंगा। तो सुबह उठा एंड अराउंड 9 o'clock I called the DDC person and I said, sir, क्या हो रहा है? He said, I'll just get back to you. We're now looking at it's 11:04. I've still not heard any word. मुझे 11:30 बजे मुझे अरुण जेटली स्टेडियम पहुंचना था to start my videos. I have to do one more Raposo live stream. I have to do a live stream for this channel brought to you by Dafa News. Then I have to link up with the TV9 crew. I have to link up with the Network 18, the Cricket Next team. तो मेरे 4 या 5 शोज, मैक्सिमम 5 शोज मुझे आज ग्राउंड से कवर करना था। बट व्हेन आई हैव नॉट गॉट वेरिफिकेशन के मैं ग्राउंड पे मुझे एक्सेस मिलेगा, ऐसे यार ये क्या मुसीबत है? Then I realized there's no point going all the way to Kotla, driving an hour there, finding parking, to be told कि सर आप उस लिस्ट में नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं, ये जो बार कोड है, इफ यू स्कैन दिस बार कोड एंड इट बीप्स, द रेड लाइट फ्लैशेस, इसका मतलब है कि आप आज के दिन, मतलब आज के मैच के लिए अरुण जेटली स्टेडियम के सिस्टम में आप है नहीं। और क्योंकि nobody from the ICC, BCCI or the DDCA can tell me what the reason for being rejected was, I said, yeah, this is very frustrating. So I'm not going to do it. So मैंने कहा चलो थोड़ा जल्दी ये लाइव स्ट्रीम शुरू करते हैं। So here I am once again streaming to you. I hope कि आगे ऐसा दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे 11 मैचेस है वर्ल्ड कप में। And so one person from the ICC did tell me कि most likely it's an overflow issue, यानी कि प्रेस बॉक्स, और दिल्ली का प्रेस बॉक्स इतना बड़ा नहीं है जैसे कि और स्टेडियम्स में होता है। लेकिन मैंने कहा यार, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, दिल्ली में इस मैच के लिए प्रेस बॉक्स कैसा फुल हो गया? तो फिर उस शख्स ने मुझे बताया था कि नहीं नहीं, श्रीलंका से बहुत लोग आए हैं और साउथ अफ्रीका से कुछ लोग आए। लेकिन आई गॉट अ गट फीलिंग कि प्रॉब्ली यहाँ दिल्ली एनसीआर के काफी इंडियन जर्नलिस्ट ने वर्ल्ड कप एक वर्ल्ड कप मैच कवर करने के लिए, हो सके बहुत लोगों ने अप्लाई किया है। अनलेस मे बी फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन a couple of people, but it's very very strange कि ये पहली बार मेरे साथ हुआ है जहां पे अक्रेडिटेशन हासिल करके उसके बाद भी मैच डे अक्रेडिटेशन मना कर दिया। एंड once the ICC says for this match you've been rejected, that means कि ग्राउंड जाकर कोई बहस करने का फायदा नहीं, because
the system says you're not there. So a bit of a disappointing start to the day. मुझे लगा कि यार आज सुबह सारे कॉन्टैक्ट्स लगा के कोई तो मुझे बोल पाएगा कि आप रिजेक्ट क्यों हो, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, what to do. Yes, Rachit, that is a bummer because now of my 11 matches, I'm one is down, and I don't know whether अगला मैच जो है मेरा कोटला पे, that's the 11th India Afghanistan. अब India Afghanistan, I can understand there'll be 60 to 70, 80 Indian journalists there, but I thought, yeah, Sri Lanka, South Africa, you know, not many traveling journalists. So anyway, something's not adding up. ऐसा चलो कोई भी निराश होने के बाद है, लेकिन let's just continue the live streams. मैंने वादा किया था कि आपसे कि मैं जुड़ूंगा, so I'm home once again, and hopefully on the 11th I can join you from the Kotla. Hmm. Yes, Ankur, Afghanistan has started well. I was just doing a live stream somewhere else before I came. Um, and I said, gone are the days when you can look at a matchup like Afghanistan, Bangladesh and say कि भाई ये टीम फेवरेट्स है. अफगानिस्तान काफी टीम को टक्कर दे चुकी है. अभी बांग्लादेश जाकर कुछ ही महीने पहले वो 2-1 मार्जिन से एक वनडे सीरीज जीत के आई. तो लेट्स सी. Damaru, how are you? Hello, Kamal. Good morning. Aaron Finch that Gill brings terror an Australian team. I wouldn't say anything like terror. I think that's just Aaron Finch just trying to play some mind game. But definitely the form that Shubman Gill is in. I mean, he's got hundreds against Australia. He's the number one Indian batsman this year. He's the overall leading run getter in ODIs. He's narrowing the gap on top rank Babar Azam or Khaskar. I mean, the kind of form he's in, it's a big loss. And technically, of course, Ishan Kishan doesn't come anywhere near Shubman Gill. But if you can call on someone like Ishan Kishan, who's done decently well as a backup opener. Of course, Shubman Gill nahi hai. It's a massive, massive blow. But let's hope that, because जितना मुझे मालूम है, आपको डेंगू जाता है तो इंसान को उससे रिकवर करने के लिए 10 दिन, कभी-कभी 2.5 हफ्ते लग जाते हैं. Now you're playing elite sport, you're already physically drained, the body is very, very weak. हमारे जो एक कॉमन मित्र हैं, आप देख सकते हैं, जॉन पॉल राज नाम के व्यक्ति ने अभी मुझसे सवाल पूछा. सवाल का जवाब दूंगा. हमारा एक कॉमन फ्रेंड है रॉनजॉय राव, वो अभी डेंगी से रिकवर कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई बॉडी पे जो असर पड़ता है वो बहुत बहुत मुश्किल है. And that's our common friend Ronjoy Rao. Imagine Shubman Gill, who has to train day in day out as an elite athlete. So I think if the case is it serious dengue, ये मैच तो कल का गिल नहीं खेलेंगे. हो सके सेकंड मैच, बल्कि आई थिंक सेकंड मैच तक नहीं खेल पाएंगे. But can you imagine Indian team going into a World Cup without their best informed one-day batsman, and he's not playing the first two matches or the first three games? That's a major setback for the Indian team. So but no, Damru, I don't agree with Aaron Finch's statement. Your bowling combination, my bowling combination will be the same. Like I said in yesterday's video, Siraj, Bumrah, Kuldeep, Jadeja. If the pitch is going to turn like Chennai tracks do, then Shardul goes out and Ashwin comes in. But it's a very, very fine line. I'll tell you why. The last time India and Australia played a match in Chennai was in the month of March. It was a deciding third ODI. India lost that match. I think Australia won by 20 odd runs. Uh, Adam Zampa took 4 wickets and Ashton Agar took 2 wickets. That was a very slow and dry Chennai wicket, a typical Chennai wicket. और उस हार के बाद रोहित शर्मा ने कहा था कि ऐसे पिचेस पर खेलना हमारे लिए मुश्किल है. Now you fast forward to 6 months later, a relay track at the M.A. Chidambaram Stadium in Chennai. मुझे लगता नहीं है कि आईसीसी, बीसीसीआई, इंडियन टीम ऐसी रिस्क लेगी कि भैया इंडिया का पहला मैच एक टर्निंग ट्रैक पे हो. Yes, Ashwin is from Chennai. He's a master of Indian conditions. But do you actually believe, I don't, that India will get a traditional slow and dry turning track in Chennai when it can backfire with Maxwell and Adam Zampa? I don't. So I think it's going to be a 320, 330 track. If that's the case, then to my mind, Damru Shardul Thakur plays. But if the team feels it's going to turn, then Ashwin has to play. राजा ये कहा, ये क्या जर्सी पहना है सर? ये बेसबॉल जर्सी है, मतलब बेसबॉल स्टाइल जर्सी है. The most comfortable things to wear when you're doing shows from home. Obviously, when you go out, then you put on a polo shirt. But this is a very, very it's one of those replica baseball jerseys. ऐसे 3-4 मैंने खरीदे. आप बताइए क्या हालचाल सर? I think it's a confidence issue. This is South Africa's last chance to make a mark at the World Cup and at least make semis. My 11 is De Kock, Bavuma, Markham, Van der Dusen, Klassen, Miller, Janssen, Rabada, Maharaj, Nagiri, Shamsi. I think that's a perfect 11 that they can play. My thing is when it comes to South African teams,
They've always had strong teams going to World Cups, but due to some bad calls, some bad luck, some self-inflicted pain, they've just never been able to crack the final hurdle. And I just don't think, despite having a damn good middle order, मुझे लगता नहीं है कि ये South African team को ज्यादा तगड़ा मुकाबला दे पाएगी. But you win 3 matches and you're almost in the semis. So let's see. अर्पित, सॉरी, राहुल कह रहे सर आप इंडिया नहीं भाई, मैं तो बोल चुका हूँ, शायद आप मेरे पहले स्ट्रीम्स पे जुड़े नहीं हो. वो मैच तो मुझे मुझे अहमदाबाद, कलकत्ता, लखनऊ, धर्मशाला कैंसिल करना पड़ा. The longer the ICC and the BCCI took to release the schedule, so I'm not going to that match. But like I said, I was supposed to do 11 matches. आप लोग शायद ये live stream पे late जुड़े हो. I was just telling the viewers, this is my World Cup accreditation. I've been approved. You can see it. James Alter, reporter, TV9 News Network. This means कि आप हर वर्ल्ड कप मैच आप कवर कर सकते हो, लेकिन उसके ऊपर आपको हर दिन हर मैच से पहले रात को आपको एक ईमेल आएगा. इट्स एन ऑटोमेटेड ईमेल फ्रॉम द आईसीसी व्हिच टेल्स यू, डिस्पाइट हैविंग this does not guarantee you a match day pass. मतलब if the press box is full or something goes wrong, they have the option to say you're rejected. और कल 9:05 पर मुझे वो ऑटोमेटेड ईमेल आया और उसमें लिखा था कि your pass has been rejected. Not this is the accreditation, but every match day to get into a ground. आज का match I was supposed to be at the Kotla at 11:30 to start previewing South Africa, Sri Lanka. It said you have been rejected. So like I was telling the viewers about 10 minutes ago, I called the ICC, called the BCCI, I got in touch with DDCA. Nobody was able to tell me, बस हाँ, इस मैच के लिए आप ग्राउंड के अंदर अलाउड नहीं हो, but we can't tell you why. The closest answer I got was that the press box is full. मैंने कहा यार, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका में मतलब कितने लोग आ चुके हैं साउथ अफ्रीका से, कितने लोग आ चुके हैं श्रीलंका से, but जो भी है. So here I am. I was supposed to be driving to the Kotla right now to start my 11:30 live stream for all of you from outside the ground, but नहीं हुआ. निराश था सुबह तक, लेकिन मैंने कहा छड्डो जी, 10 और मैच है तुम्हारे. So let's see how it goes. Do you think KL Rahul should open? No, Arpit, no. KL Rahul should never come anywhere near opening mark. We've tried that. It didn't really work out. He's much better suited to batting at number 5. He needs to anchor the innings. No. Ishan Kishan, to my book, has done enough to open as a backup opener. He is India's third opener. But let's all hope Gill gets back into form, because you cannot have Shubman Gill out for more than one match, because the guy's in such good form. So a dark day for Pakistan cricket, says Pro Pakistani. We lost against Bangladesh in Asian Games. Congrats to Team India for winning 100+ medals in Asian Games. Gold medal confirmed. Well, yes, gold medal does look confirmed. Let me just check what's happening in that match. Okay, that's the final starts. Look, somebody else asked me yesterday, what's your take on Pakistan losing? So here's my thing. I'll tell you my perspective. ये मैंने कल भी कहा था. I'll keep it very quick on the Asian Games. When you knew that the Asian Games is clashing with the One-Day World Cup, you knew कि भाई automatically जो भी teams वहां जाएंगे, मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनके teams B teams होंगे. Now, when you come down to the B level of cricket, India has the best bench strength in the world. They have the best depth. Look at the team that is in the Asian Games final, which starts in about 15-20 minutes. I mean, it's got Rituraj Gaikwad, it's got Arshdeep Singh, Ravi Bishnoi, Avesh Khan, Yashasvi Jaiswal, Tilak Verma. It's got players who played for India, who played a lot of IPL cricket. They're already stars in the making. No other team, na Afghanistan, na Bangladesh, na Pakistan, Sri Lanka, इनके पास उस level के अंतरराष्ट्रीय players नहीं है. The team that has the second most experienced Asian Games squad is the other team in the final. That is Afghanistan. And Gulbadin is there. Hazidullah Zazai is there. That other all-rounder is there. They got spinners. When I look at the Pakistan team for the Asian Games, yes, there are a few players. Haider Ali is there, and Khushdil Shah is there, and a couple others. But it's a squad made up of domestic talent. So Pakistan team for the Asian Games is quite weak. So I'm not surprised that they've not made the final. But again, I wouldn't. I mean, आप कह रहे हो कि dark day है. कोई बात नहीं, होता है. But it wasn't your best team that went to the Asian Games. So इतना निराश मत होइए. कल आपकी टीम जीत गई नेदरलैंड से. उसी में आप खुशी मना सकते हैं, दोस्त. Rahul Rawat from Sports Talk tweeted that players are using towels while catching and fielding. If dew is there, what should be plan of action? 3 spinners. Exactly. If there's dew, Ashutosh, I've said it before, 3 spinners can seriously backfire, because if Mitchell Marsh
David Warner, Labuschagne, Maxwell, if they get stuck in, that leaves you with only two frontline pace bowlers and Hardik Pandya, who rarely bowls more than 6 overs. Ashwin, Kuldeep, Jadeja is a good idea on a turning track, but if it doesn't turn and it backfires, three spinners, like you said, would indeed be a disaster. Which is why I'm still backing Shardul Thakur to play ahead of Ashwin in tomorrow's match. I'll put out a detailed video on this later on the day after I finish all my 3-4 lives of the day. But yeah, coming back to South Africa, what do you think is the reason why अब तक ये team World Cup नहीं जीत पाए? Bad luck, bad planning, some some suicidal decisions in terms of selections. Of course, bad luck in 92, 96. Brian Lara played a blinder with some help from the umpire in the quarterfinal. 99, I mean, what a match. I was there at Edgbaston when the match got tied, when Klusner and Donald had that brain fade and the scores were tied. 2003, we saw that DLS team sheet Sean Pollock and Boucher couldn't figure out. 2007, they played good cricket, but that unbeatable Australian side smashed them. 2011, they were playing. They were in the quarterfinals. Hashim Amla was doing really well. Then he cut that ball from Nathan McCullum onto the boot of the keeper, and then it was rebounded. So 2015, I mean, wrong team selection. They played Vernon Philander. McCullum just smashed him. They picked the wrong team and then they choked there again. Or 19 में they were one of the poorer teams. So पता नहीं, I just don't feel इनकी किस्मत में लिखा है वर्ल्ड कप जीतना. Accent, सर कौन सा accent सुनना चाहेंगे आप पूछिए बताऊंगा मैं. If SA win more matches this time, will it be tough for one place in top four? India, Australia, इनमें से कोई एक बार होगा तभी. बिल्कुल, इन तीनों में से किसी को बाहर तो जाना पड़ेगा राहुल, अगर साउथ अफ्रीका को जाना होगा. लेकिन साउथ अफ्रीका के पास नोकिया नहीं है, जिनके पास गति है सबसे ज्यादा, जिनके पास अनुभव बहुत है आईपीएल द्वारा यहाँ खेलने का. Magala was not a starter, but he's also a blow. I think in Keshav Maharaj, in Tabraiz Shamsi, they have decent spinners. They've still got a good pace attack. इनका जो मिडिल ऑर्डर है वो बहुत बहुत तगड़ा है. बहुत लोग कह रहे हैं कि ये इनका बेस्ट मिडिल ऑर्डर बैटिंग है. मानना पड़ेगा, बहुत बहुत अच्छी बैटिंग ऑर्डर है ये. But somehow South Africa always inflict wounds on themselves, you know. गलत डिसीजन, कुछ 15-20 minute of harakiri. So पता नहीं, I just somehow I can never, since 1999 when I was there at Edgbaston watching that semi-final. Mr. John Paul Rudge knows all about that. He knew me very very well in the summer of 99. उसके बाद से मैंने कहा था अपने आप से, मैं 18 साल का था, मैंने कहा भाई ये टीम से तो मेरे मेरे लाइफ टाइम में ये टीम कभी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएगी. और देखिए 23 साल के बाद, 24 साल के बाद अभी तक मेरा प्रेडिक्शन बिल्कुल सही चल रहा है. साउथ अफ्रीका एक वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएगी. पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में दे वर लुकिंग सो गुड, दे लॉस्ट टू नेदरलैंड्स. सो जब तक मैं जिंदा हूं, मैंने कहा 99 में, लोग हंसे मेरे ऊपर क्योंकि 99 में टॉप की टीम थी वो, मैं 18 साल का था. मैंने कहा इन माय लाइफ टाइम साउथ अफ्रीका और नेवर विनिंग अ वर्ल्ड कप. सो एंड आई स्टैंड fully vindicated so far. Let's see what happens. SA always had good players, says Domru. We need players with nerves of steel. Yes, they don't have it. Well, South Africans lack. Your decision making is affected on your ability to handle pressure. Bilkul sahi. Tarun saying, hello, World Cup title we won by playing as a team. I don't see SA playing as a team in the warm-up match. I think it's between Australia, New Zealand, India. Correct. And despite England being hammered, I still put England in my top four. Wrongamon is saying current South Africa team looks good, but their spinning options isn't enough. They've never had world-class spinners to win you a World Cup. And I think Shamsi and Maharaj, in these conditions, they should be a handful. Aiden Markram can chip in. Again, with South Africa, Wrongmon, it's for me at least, ये मेरी खुद की बात है, आप माने ना माने. It's not about the personnel they pick. It's just about the collective decisions, the brain fades, the runouts, the wrong batting order being changed. You know, 2015 Eden Park. You know, the rain came. They were in control after the rain. After the rain break, De Villiers lost his mojo. Faf du Plessis lost his mojo. You know, then they had Kyle Abbott, but then because of selection policies, they dropped their best death bowler. They played Philander. So it's always something just doesn't add up with this team. You know, like not reading team sheets. Of course, some bad luck, some heartbreak, but it's collectively जो एक mental strength आपको चाहिए जो ऑस्ट्रेलियन टीम्स में है, जो कभी कभार धोनी के पास था एटलीस्ट, वो इस साउथ अफ्रीकन टीम में या पिछले 7-8 साउथ अफ्रीकन टीम्स के पास वो नहीं है. एंड आई हेट टू बी नेगेटिव, बट मुझे तो साउथ अफ्रीकन टीम को देख के आज तक नहीं लगा 99 के बाद कि भाई ये कभी वर्ल्ड कप जीत पाएगा. प्लेयर्स यार, एलन डोनाल्ड थे इनके पास, डिविलियर्स, यार Hansi Cronje, Jack Callis, you know, Gary Kirsten, top players in every, Herschel Gibbs in every World Cup, Graham Smith.
but somehow collectively they managed to, I hate to use the word choke, but that's what they do, right? So, anyways, देखते हैं. चलिए साथियों, मजा आया आपसे बात करके. अब I wish I was at the Kotla with my pass around my neck talking to all of you, but hopefully on the 11th I can go there. In fact, the 10th when I can do the preview for India Afghanistan. Hopefully that day I won't get rejected. Stick around. 12:30 I'll be on Reposo. 1 o'clock I'll be on Cricket Next. Innings break 5:30 I'll be on Cricket Next, and I'll be back on this same video in the evening previewing tomorrow's clash between India and Australia. You have a great day, my friends. Thank you for sticking around. Please जाते जाते लाइक बटन ठोके ताकि यूट्यूब का एल्गोरिथम इस वीडियो को थोड़ा और प्रमोट करे. लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय फ्रेंड्स.